हाँ सुहेल भाई, ये एड्रेस पूल में से मतलब जो क्लाइंट सर्वर है जो रीच करना चाह रहा है इसको, तो एक टेम्पररी ये देगा क्या, आईपी देगा क्या? यस ऑब्वियसली, सिर्फ उतने सेशन के लिए जब तक आप कनेक्टेड हो। ओके। So let's start. I think okay. Okay, so let's start. Is it clear, guys, to everyone? Anyone who did not understand anything, any step कुछ अभी तक नहीं समझ में आया? वैसे अब तक हमने सारी वही चीजें रिपीट की जो हम लोगों ने फ्राइडे को की थी. This is the very first step which we are learning, नया वाला. So anyone who did not understand anything? Today I am skipping the part how to create your certificate, because certificate you will get from your infrastructure team. और अगर आपको बनाना है, so you ask me guys, I'll give you the certificates. And if not, you can create it like this. इसको बस copy paste करो, certificates आपके मिल जाएंगे. If not, it's simple thing, you guys ask me whenever you're doing a practical, मैं आपको नए certificates बनाकर दे दूंगा. I have a tool also which will it will make your job easier to create the certificate. Basic होगा आपके लिए, काफी ज्यादा simple होगा वो. Okay guys, is it clear? Should we proceed? Yeah, we can. So once you have the certificate, guys, once you have the certificate with you, you'll have to come to this page. Now we saw already कि ये कहाँ से आए, हम gateway पे गए हम लोग, then we click on point to site, then we are on this page. Address pool क्या होता है, that I explained. This I will just name root certificate. There are two certificates. One is root certificate, which you are keeping with you. It is sort of a lock, you can say. It is a lock. Root certificate is a lock. And the another one is your client certificate. Client certificate is nothing but the key. तो आपने किसी को अपना ये दे रखा है कि भाई this is my lock and this is the key. Whenever you want to access, feel free to do that. Or maybe this isn't the combination number. Okay. So once you have the certificate with you guys, I'll guide you how to use the information from certificate. What you will get from the certificate team, or when if you request me, I'll create a certificate for you. So this is what you will get, and you will have a certificate. So you'll have to right click, open with Notepad. This is what you will see. So you'll have to copy everything except begin और ये वाला. इसके और इसके बीच में जो कुछ है, you'll have to copy and then you paste it here. It is as good as you are applying your certificate. Okay, just SSL certificates होते हैं ना, that you're doing. I have saved it now. This is done. I've done it. That's all. Revoke वाला हम बाद में पढ़ेंगे, how to revoke it. First, let's establish a connection first. Let it. Okay, it is saving. What we'll have to do,
वंस वी सेव, एक बार सेव हो गया, देन व्हाट विल यू डू? सेव होने के बाद आप लोगों को जो है VPN क्लाइंट इंस्टॉल करना पड़ेगा. नाउ व्हाट इज द VPN क्लाइंट? कैन एनीवन ऑफ यू गिव मी एन एग्जांपल ऑफ VPN क्लाइंट? So it's Cisco Connect, which we use on our computers, right? Yeah. Right, guys. Cisco AnyConnect, it is one of the examples of VPN client. But here, when we are using Azure solution, Azure has given उनका खुद का एक VPN client दे रखा. You don't have to use Cisco. ठीक है? So what they are saying, once you are done with this, ये आपका configuration अगर यहाँ तक हो गया है, ठीक है? It is still saving. But what they say, once this is done, you ask your client, ये configuration कहाँ तक चल रहा है? ये आपके पोर्टल पे चल रहा है. इसके बाद के स्टेप्स कहां पर हो गए? क्लाइंट मशीन पे हो गए, जो भी क्लाइंट मशीन कनेक्ट होना चाहता है, राइट? सो जो भी आपका चंक होगा, जिस भी क्लाइंट को यू हैव डिसाइडेड कि यार ये टीम जो है, टीम XYZ, दे आर गोइंग टू एक्सेस दीज मशीन्स, इसमें जितने भी मशीन्स, एज ऑफ नाउ आई हैव ओनली वन, बट दे हैव डिसाइडेड कि इस सर्विस ग्रुप में, इस रिसोर्स ग्रुप में जितने भी मशीन्स है और इस IP रेंज में जितने भी मशीन्स है, इसको ये पर्टिकुलर टीम के 4 बंदे ही एक्सेस करेंगे. So you will share this information only with those 4 people, right? One of them is your certificate. How to share that we'll see. But उससे पहले, certificate से पहले, what you will have to ask them to install a client through which they can connect to Azure VPN. So from where can you install this client? This is the link. और ये link जो है guys, ये नहीं है. What do you say? मेरा सब्सक्रिप्शन स्पेसिफिक नहीं है. I just have to click there and ये ओपन हो जाता है. I mean, all of you can also install it now if you want. ठीक है, ये ओपन हो जाता है Azure VPN client. Like you have Cisco VPN client, we have Azure VPN client. Then you can click on Get in Store app. I will open my store, Microsoft Store, like we have Google Store, Play Store है उस तरह का. Are you guys getting it? Any confusion? Where are we performing these steps, guys? Is it on Azure portal, my machine, client machine? कहाँ पर परफॉर्म कर रहा हूँ ये मैं? क्लाइंट मशीन. यस, यूजर एंड. सो मल्टीपल यूजर्स के पास जिनको भी एक्सेस चाहिए होगा ना, चाहे वो 1000 भी क्यों ना इंडिविजुअली, मतलब देयर आर सॉफ्टवेयर जहां से पुश भी किया जा सकता है. ऐसा नहीं कि हर काम मैन्युअल होता है. वैसे भी दिस इज नॉट योर जॉब. ये सर्विस डेस्क वाले उनको करवा देंगे इन यूजर्स से कनेक्ट करके कि दिस इज द रिक्वायरमेंट, प्लीज गो हियर एंड डाउनलोड दिस. वंस दिस इज डाउनलोड, मेरे केस में ऑलरेडी डाउनलोडेड था इसलिए ओपन का ऑप्शन दे रहा है, अदरवाइज ये इंस्टॉल का ऑप्शन देता है. द मोमेंट यू डू इट, इट विल गिव यू एन ऑप्शन टू ओपन इट. You open it and then you will have an option to connect. This is how it looks. Let me see if we have. Let me open the settings. Right. Once I click on VPN settings, ये page open हुआ. Are you guys getting it? I hope you guys are not getting confused. This is my old one, इसलिए मैं इसको फिलहाल नहीं use कर रहा हूँ. Let me remove this. So this is how it will look. Are you guys comfortable? कहाँ से कहाँ तक गए हम लोग? Did you guys get it? Yes, guys. Ibrahim, Amit, Juhi, Neha, Srishti, Yes, bhai. Yogesh. Yes. Okay, so this is on client computer. With the help of link, we asked them to install a software. They did that. Software पे settings पे click किया. We came here. Click on add VPN. See, Azure VPN. कौन से VPN की हम बात कर रहे हैं? Azure VPN client. Now connection name. It could be any name. Connection name आप कुछ भी दे दो. So here I'm saying Azure point to site. Server name और IP. Now which IP will you give, guys? What do you think? कौन सा IP दोगे आप यहाँ पर? गेटवे वाला. एग्जैक्टली. गेटवे का जो IP है आपका वो दोगे आप.
ये जो है आपका वर्चुअल नेटवर्क गेटवे, इसका कौन सा आईपी? इट हैज ओनली पब्लिक आईपी, सो दिस इज द आईपी यू आर गिविंग। ठीक है, you save this information, now try to connect. What does it say? User interaction required to complete Active Directory authentication. Please attempt connection from Azure VPN. Let's see. I hope this works today, guys. We'll refresh and see कोई नया connection आया है क्या? Refresh VPN connection. Yes, someone saying something? There's a requirement to upload certificate for client as well. Yes, yes, obviously. वही देख रहा हूँ कहाँ पर मिलेगा हमको ऑप्शन। Certificate information. So this is the certificate we'll have to use, client certificate. So I'll have to see यहाँ पर कोई दिख रहा है क्या client certificate? Authentication, type in. Okay, now let me see कि client certificate हम लोगों को कहाँ दिखता है. I'll show it to you guys. You'll have to open this Microsoft Management Console. I understand, guys. एक बार में आप लोगों को नहीं समझ में आएगा, तो whenever you're practicing, even if 2 or 3 people at a time, let me know. I'll share the screen और इसको हम एक बार और करेंगे, तब आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा. इसमें काफी स्टेप्स है क्योंकि बट these steps which I am doing here, ये वैसे भी आप लोगों का काम नहीं होता है. ठीक, ये सर्विस डेस्क को उसकी ट्रेनिंग होती है ऑलरेडी. सर्विस डेस्क पीपल विल डू इट. आपका काम था सर्टिफिकेट वगैरह बना के रखना एंड शेयर करना. सो फर्स्ट लेट्स सी, I'll delete all other certificates which are there. इनमें से ही हम लोगों ने एक जो है ना कल उस दिन एक्सपोर्ट किया था. सो आई हैव टू चेक which is the latest one. Client certificate. So it's either this one. Or let me do one thing. So I have root certificate and I have client certificate. Let's see if I'm able to see this now. I'll refresh this once. Let me cancel this. Add. Okay, now you see I have deleted. यहाँ से सारे delete कर दिए तो एक ही है, confusion कम है यहाँ पर.
यहाँ पे शायद रूट सर्टिफिकेट सेलेक्ट करना होगा ना, P2S रूट. Yes, you'll have to do that, but I'm checking के what is this server secret? Do we have any? Let's see. आपने जो पासवर्ड डाला था अभी, Trying. No. This should not appear like this. Certificates, I think I'll have to create once again. This is something else. This is from Apple. So these are the two certificates we are dealing with. And I am definitely missing on something जिसकी वजह से ये capture नहीं हुआ information. If you guys remember, I have told you already that ये एक बार में वैसे ही नहीं होता, and this is the second attempt I guess we are doing. So if it is not working now, what I'll do will finish today's class. And how many of are we? So maybe we can make a group of 3, or maybe tomorrow. कल इन सबको मैं रिपीट नहीं करूंगा, ठीक है? Tomorrow will start from here itself. I'll have to check वो certificates मुझको फिर से बनाने होंगे. Maybe duplication हो गया certificate में. That is the reason it is happening. Let me check meanwhile. Yes, meanwhile you can read till the time we have session. We'll give it a try and let's see if that works. Meanwhile आप लोग कुछ questions है आपके mind में, वो सब ये कर सकते हो. I'm keeping it on mute. I'll go through the documents once and let me check. No, I deleted, but I imported the same certificate, so that is not the issue. Let me try one thing here. I was doing it manually. So what I'll do here is, let me remove this. I'll remove this. I'll go to store and I'll see if I can remove my VPN as well completely.
what I did, I installed it generic version, but that should work. You can try that also. If that doesn't work, we have the this way. Here, यहाँ पर जो copy कर लिया मैंने root certificate, okay? Once this is done, the root certificate, you have an option to download VPN. What did we do इसके पहले? एक हम लोगों ने generic link जो है यहाँ से download किया था, and we had to configure it. यहाँ से download करके हम लोगों को configure करना था. And what am I doing now? यहाँ से download कर रहा हूँ मैं. Let's see if this will, because this will capture this information automatically. So I clicked on download. I get this file. It's still saving. We'll try this, guys. Let's see if it works. If not, we'll do it tomorrow again. I'll make sure कल हो जाए. Tomorrow I'll create the certificates वगैरह पूरा scratch से. And tomorrow we'll finish this topic if it is not working today. Did you guys get कि यहाँ पर हम लोगों ने क्या दो steps अलग किए? Initially VPN जो है I was downloading from here. This is an old link. मेरे इसमें काफी पुराना link है. This is a generic site to download it. अब मैंने उसको uninstall करके what am I doing? I am installing it from here. मतलब इसके पास ये information already होगी. Did you guys get it? कि कहाँ से download कर रहा हूँ मैं? Yeah. I'm downloading it from the place where I configured it. So this has been downloaded. Hopefully this will have some better information. I'm unzipping that folder. I hope these are the basic steps. Unzip वगैरह किसी को explain करने की जरूरत नहीं है, right? Okay. Here we have got the root certificate as well. So I don't have to do it manually. So let's say if I can import this certificate. So उसमें second folder में एक installer है. Yes, we'll do that. वहीं से install करेंगे हम लोग. Okay. Now you see guys, वो red mark यहाँ पर नहीं आ रहा है. You see वो earlier certificate में जो red mark मैंने यहाँ पर बताया था आपको, I think उसका validity खत्म हो गया था. What was it? I am not sure. But this is here. So you always have to install the certificate, guys. ये यहाँ पर है just, इसका मतलब ये नहीं कि आपने install कर लिया, ठीक है? You have to install this certificate. Now you have installed this certificate. It will say the certificate has been imported successfully. Now if I go and check my certificates, यहाँ पर दिखना चाहिए वो मुझको. So if I refresh this, root certificate should appear here. Meanwhile, we'll install this one. So this is the setup which we are downloading. इस तरह का ये आ रहा है. Do you want to install a VPN client for P2S VNet? Now you guys see, ये नाम मैंने नहीं दिया है, right? ये नाम already कहाँ से पिक किया इसने? Azure portal से. Why? Because ये एक specific download वाली फाइल हम लोगों को मिली है. From where did it pick this name? यहाँ से. ये दिख रहा है, ये नाम इसने अपने आप ले लिया है. इसका जो भी नाम मैं रखता वो नाम already उस तरह से दिखता. Now I'll see if it has been installed properly.
I got Azure VPN and let's see if I think this is still the old one. If you एक चीज if I say, बोलो ना. if you go to वो ncpa.cpl वाला स्क्रीन होता है ना. हाँ. वहीं पर तो है हम लोग नेटवर्क वाला. तो जो सब नेटवर्क दिखाते हैं ना, उसमें एक होना. हाँ VPN होना चाहिए बट आई थिंक इंस्टॉल नहीं हुआ है अब तक पूरा. अच्छा, विंडोज 11 में अलग है क्या? हाँ विंडोज 11 का थोड़ा सा अलग बट वैसा ही है घूम फिर के. आई एम ट्राइंग टू इंस्टॉल इट अगेन, लेट्स सी. Or you check looks like installing now. Yes, sorry, what was that, Amit? अगर वाईफाई के यहाँ देखे तो वहाँ भी दिखाता है कभी. Let's see. Normally VPN प्रोफाइल आ जाने के बाद यहाँ पर दिखाता है. We will see ये दिख रहा है या नहीं दिख रहा है. We'll wait for this page to appear, guys. I'll see कि वहां पर है या नहीं. I'm going to VPN settings, but for some reason it is closing again and again. See if I click here, I search for VPN setting. This is the place I'm looking for, but it is not getting open. And because I have another VPNs also, maybe it is conflicting. I'll have to check that कि क्यों हो रहा है exactly. One thing I could do meanwhile is I have another virtual machine जिस पे से मैं ट्राई करता हूँ, क्योंकि मेरे फिजिकल मशीन पे जो है ना बहुत सारे VPNs वगैरह वैसे ही है. So we'll see अगर वो मेरे इस मशीन पे काम कर रहा है कि अदरवाइज फ्रॉम अ वर्चुअल मशीन जो इस पे है होस्टेड मेरा AWS पे है, वहां से I'll try to connect to this machine. That doesn't matter कि मैं वर्चुअल मशीन से आ रहा हूँ या कहाँ से आ रहा हूँ, इसके लिए तो वो प्राइवेट नेटवर्क होना चाहिए.
So let's see if that works. I just want to work this in recording this session, guys. So at least we can have this एक recording session में. इसके अलावा whenever you guys are practicing, at least how many of you are here? Tabrez to know everything, so forget him. Yogesh, Risti, Sana, Neha, Chuhi, Ibrahim, Amit. Yes. So 8 of you. Either it is in pattern or maybe a group of you. However you guys want to do it, but practice, and whenever you're practicing, do let me know. जब आपका पूरा virtual network gateway तक बन जाए ना, उसके बाद let me know. So I can be a part of that, और उसमें थोड़े जितने चीजें explain कर दूंगा मैं. So it will be a revision for you और practice भी. Right? Because I understand हम लोग इसको बहुत slow कर रहे हैं और काफी सारे इसमें errors आ गए, so it could be confusing. Either you can go back and watch this video. I'll try to find अगर यहाँ पर कोई मुझको एक short और crisp सा YouTube video मिलता है तो if I get that I'll share that. If not, अगर वैसा कुछ नहीं मिलता है, so you guys try to do it, and whenever you are practicing, अगर if you guys think कि without calling me हो गया और आप लोगों को समझ में आ गया, that's well and good. अगर नहीं होता है, so please let me know, I'll be part of that. वहां पर हम recording वगैरह नहीं रखेंगे, but इसको quickly कर लेंगे, so एक practice हो जाएगा, and then we will be done with our networking वाला sessions, और उसके बाद से हम ये शुरू कर सकते हैं, और storage वाला topic हम we can start. So let me quickly see if I can do it on my virtual machine. अगर होता है तो well and good, नहीं होगा so you guys will have to do it. और अगर हम लोगों को भी करना पड़े तो बाद में एक और सेशन लेके हम इसको प्रैक्टिकल रिकॉर्डिंग में कर लेंगे. So I'm trying to log into that machine of mine. वहां पर मैं सेम यही करूंगा, डाउनलोड करूंगा उस VPN को, इस वाले फाइल को मैं डाउनलोड करूंगा. Okay guys, so here I am on my virtual machine. It could be in Azure, AWS, GCP, या फिर मेरा दूसरा physical machine समझ लो आप लोग कहीं पर भी हो. I have installed this. I have unzipped it. इसके आगे मैं I'll require those 2 certificates also जो मैंने वहां पर बनाए थे. I'll require those certificates also. I'll quickly open the certificate console. ये आपको नहीं समझ में आ रहा तो that is fine. I told you ये आपका काम वैसे भी नहीं रहने वाला है. Certificate you won't be doing it. हाँ, but यहाँ practice के लिए you guys will require it. यहाँ पर मैं import कर लेता हूँ certificates को quickly. There are 3 certificates. I'll install all of them. ठीक है, this is done. This is done. So next thing I have to do is install this client. यहीं पर हम लोग वहां पर stuck हो रहे थे उस machine पे. We'll see if this is working on this machine. Click on yes.
ये VPN सेटिंग वहां पर नहीं आ रहा है। इफ यू गाइस सी यहाँ पर ये मुझको VPN सेटिंग मिल गया। डिस्कनेक्टिंग, कनेक्ट, it shows connected. Now let's see, I'll try to take remote of which machine. कौन सी मशीन का रिमोट हम टारगेट कर रहे थे? Yes, yes, this is the machine T-Soft. ये मशीन का हम रिमोट टारगेट कर रहे थे, but how are we targeting? Using private IP. So I'll go to my machine here and using private IP I'll try to connect. Here it is. It is connected, guys. I mean now irrespective of the login error, मैं login कर भी नहीं पाया तो भी कोई इशू नहीं है। क्यों? अगर यहाँ login नहीं कर पाया तो वो कौन सा error होगा? ID का error हो सकता है, कुछ भी error हो सकता है। But the moment I got my login display with the private IP, it means the connectivity is there. So luckily guys, 2 मिनट से पहले we completed the practical. थोड़ा सा फास्ट कर दिया मैंने, बट वीडियो आपके हाथ में, आप उसको 1-1 मिनट से स्लो करके देखो, पॉज करके देखो, रिपीट करके देखो, जिस तरह से भी देखना, एटलीस्ट वी गॉट इट इन रिकॉर्डिंग, तो मुझको फिर से सेशन को रिपीट नहीं करना पड़ेगा। आई होप यू गाइज आर गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, राइट? नाउ आई हैव कनेक्टेड सक्सेसफुली टू दिस वर्चुअल मशीन यूजिंग द प्राइवेट आईपी। अगर अब मैं इसका ये पब्लिक आईपी निकाल भी दूंगा ना, सो दिस मशीन इज स्टिल एक्सेसिबल टू मी। ठीक है, अगर मैं इसका पब्लिक आईपी निकाल भी देता हूँ, सो स्टिल फाइन नाउ बिकॉज आई हैव गॉट द कनेक्टिविटी। ठीक है, आई कैन disassociate this public IP and there shouldn't be any problem. See, I've done this, and while that is being disassociated, I'm still connected to the other virtual machine, to that virtual machine. Why? Because how am I connected here? Using private. So now you guys understand कि जब भी आपका इस तरह का होगा तो आप अपने कंप्यूटर से किस तरह से Azure के machines का ये ले पाओगे, प्राइवेट IP से। But I understand बहुत इसमें हम लोगों ने ये किया तो उस प्रॉपर वे से नहीं समझ में आया होगा। Hence I told you guys, whenever you guys are practicing, जिस भी तरह का आप ग्रुप बना रहे हो, so let me know whenever you guys are practicing, at least gateway बनाने तक आप रहो, and then I'll join you guys and then we'll do this. ठीक है, this is about to finish guys. I'll stop the session and I'll save the recording. You can refer the recording also. बहुत gap है उसमें, आपको forward वगैरह करके देखना पड़ेगा, but at least we got a successful practical in our recording. And anyone has any questions, please let me know. Try to start practicing on this one now. कल से हम स्टोरेज शुरू करेंगे, भूल जाओगे आप तो ये टॉपिक काफी डिफिकल्ट है। ठीक है guys, I'll stop the session now. Thank you. All right. Thank you.